Hello everyone, my name is CLASS10 and welcome to my YouTube channel Cbse Courses with Riti. Today we are going to continue with the chapter Chemical Reactions and Equations. This is the second part of the video. Today we are going to start with types of reactions. What are the types of reactions? We know what are chemical reaction and what are chemical equation. If you haven't watched my previous video, so you should first go and watch that video. Today we are going to see what are the different types of reactions. There are types of reactions which are different from one another. Let me tell you about combination reaction first. In combination reaction, two or more reactants. You know what are reactants? For example, A plus B is equals to C. So this is your reactant and this is your product, right? So in combination reaction, two or more reactant combines. What I am saying, two or more reactant combines together to form a new substance. I hope this is clear, the definition. This is very easy. I am saying that there are two reactants and when I combine them together, let's suppose this is one reactant, this is the another, and they combine to form a new substance, a new product you can say. Moreover, you should say new product. Okay? How? Let's say A plus B. A is one reactant, B is the another reactant, and it gives us AB. Okay? Which is a new product. Maybe this one is not very clear. So let us take an example to understand it more clearly. We were taking an example yesterday, if you remember, that was of carbon dioxide. See, carbon plus oxygen. Carbon plus oxygen gives us carbon dioxide, that is CO2. So if you notice, these are the reactants and this reactant combines together to form a new product. Now the thing is, the reactant can be two or more, but the product will be one only. What I am trying to say is, in combination reaction, two or more reactant combines together to form a new substance. Okay. Now the reactant here on this side, the reactant can be 2, 3 and many. But your product will be only one. You will have only one as a product. Okay? Let me tell you one more example. H2 plus O2 gives H2O. In this case also, H2 combines with O2 to give H2O. Let me give you one more example. NH3 plus HCl. NH3 is ammonia. I hope you know that. If you don't, so don't worry. I'm going to provide you with a table in which you can just understand them. NH3, that is ammonia, plus HCl, that is hydrochloric acid. You know that it's a very hard acid. So NH3 plus HCl gives us what? It gives us NH4Cl. Here also these two reactants combine together to give us a single product. Okay? I hope you got it. Two reactants. They can be more reactants as well. I am not saying only two reactants. They can be more reactants rather than two. But the product will be one only. Okay? Two reactants, one product, two reactants, one product, two reactants, one product. I hope this is clear to all of you. So let us move to the next type of reaction. Before starting with another type of reaction, I want to tell you something about quicklime. Quicklime in class 9th, you know what it is. CaO. This is known as your quicklime. And you can call it as calcium oxide. Okay? This is your quicklime. This is, you know. I'm pretty sure that you know this
In your NCERT textbook also it was there in class 9th. Now, there is one more term. There is one more term that is known as slaked lime. That is CaOH2. Sorry, here. CaOH2. Now this is what? As I said you right now, it is slaked lime. This is slaked lime. Or you can call it as your calcium hydroxide. You can call it as calcium hydroxide. I hope this is clear. Here I am telling you two terms. First term is calcium oxide and second term is calcium hydroxide. And these names are very important. This can come for one marker, like what is the other name of calcium oxide, what is the other name of calcium hydroxide, what is the other name of quicklime, what is quicklime, what is slaked lime, and so on. So this is firstly very important. Now, let us write it as a chemical equation. So when you add quicklime, it's when added to H2O. I know H2O, you must know. H2O, then it gives you CaOH2. जब आप क्विकलाइम को H2 के साथ रिएक्ट होता है तो it gives us slaked lime or calcium hydroxide. And this is also example of a, tell me what, you tell me which kind of reaction it is. अभी तो आपने एक ही reaction सीखा है, so yeah, obviously it's a combination reaction. Now tell me why it's a combination reaction. I hope you know that, as we have discussed right now only. We have two reactants but one product. Two reactants but one product. These two, this and this combines to form a new product. Okay, I hope this is clear. But yeah, story doesn't end here. इतनी सी बात नहीं है कि क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेक लाइम बन गया. We have something more to discuss about this. So let us do that first. Let us first focus to our quicklime. Quicklime, that is known as calcium oxide also, and there are some advantages of this. So let us see what are the exact what is the need of quicklime या quicklime हमारे किस तरह काम आता है. So quicklime is used as a germicide. I want you to write down this also in your notes and as of your notes, because this can also come for one marker in an MCQ way or in any other way. We need to be prepared fully. This question is there in your Lakshmi book as well of chemistry, obviously. So it is used as germicide, or you can say disinfectants. Okay. Quicklime, which is a quicklime that is also called a calcium oxide, is a germicide and a disinfectant. Okay. And quicklime is a basic medium. Quicklime is a basic medium. ठीक है? I hope this is clear. Quicklime is a basic medium. Quicklime is used as germicide, disinfectants also. Its other name is calcium oxide. This is its chemical formula. And we are clear with quicklime. Water के बारे में तो I don't think I need to tell you how water is formed. H2 plus O2 gives H2O. Now let's talk about another one, that is CaOH the whole 2. इसका मैंने आपको नाम अभी बताया था, that is a slaked lime. Slaked lime या आप इसको कह सकते हो calcium hydroxide as well. You know what is hydroxide? Hydroxide is your OH. OH को ही हम hydroxide कहते हैं. So calcium hydroxide is widely used. Just a second. Yeah. So your calcium hydroxide is very widely used for whitewashing. Sorry. Calcium hydroxide or your slaked lime is used for whitewashing. Now, why whitewashing? Why slaked lime used for whitewashing? You must be questioning. If you're not, so please do
because we are now talking about why this slake lime is used for whitewashing. Why only slake lime? Okay, so let us talk about this in deep. Let's suppose this is the wall. Okay, now let's suppose this is our wall. You put slake lime on it. आपने क्या किया, ये आपका वॉल है, आपने इस पे स्लेक लाइम का व्हाइट वॉशिंग कर दिया. स्लेक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. अब हम व्हाइट वॉशिंग क्यों करते हैं? We do white washing so that our walls look more beautiful, more shining, right? This is the reason why we do white washing, right? There's no another reason. To increase the appearance of our walls. ये तो basic सा था. Now, why this calcium hydroxide is used? So there is a reaction CaOH2 reacts with CO2. CO2 is what? Carbon dioxide. Carbon dioxide is present in our atmosphere. So जब आपने दीवार पे ये स्लिक लाइन लगाया तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि एटमॉस्फेयर में है वो हमारे स्लिक लाइन के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, हमारा स्लिक लाइन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया. रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? रिएक्ट करने के बाद इट फॉर्म्स CaCO3 that is known as calcium carbonate. Okay, now you will just, I'm telling you, आप हो सके सोचो ये हाइड्रोजन कहाँ गया. Okay, so I'm going to talk about this also in a few seconds, so just be patient. First let us focus on calcium carbonate. ये मैं आपको अभी बताती हूँ. So white washing के बाद जब आपका ये बन गया तो calcium carbonate actually the reason for the appearance, the shining appearance. ये calcium carbonate बनने में it approximately takes 2 to 3 days. आपके white washing of calcium hydroxide that is slake lime के white washing के बाद approximately 2 to 3 days after you will see that it has reacted with the carbon dioxide in your atmosphere to form calcium carbonate. Okay, and calcium carbonate के साथ we have one more thing that is your H2O. Now this H2O, I am going to tell you about H2O but not right now. Abhi I am not going to tell you about H2O because we are going to take this example only for understanding one more type of reaction. But abhi ke liye let's focus here on CaCO3. ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी कम है. H2O वाला पार्ट till H2O नहीं आना चाहिए, but still it's in your reference book, so we should learn about that also, just for our extra knowledge and for extra better understanding, because यहाँ से हाइड्रोजन गायब नहीं हो सकता, as we know there will be formation of H2O. And yeah, and one more thing, let's see if it is balanced or not. CaO2 2 plus 2 4 O4 H2 C1 balanced. ये आपको चेक करते रहना होगा. You must check it. Now this calcium carbonate is actually the formula for marble. Have you seen marble? How shining and beautiful it is. A piece of marble shines so beautifully. तो marble का जो chemical formula है ना, that is nothing but calcium carbonate. ये भी आपको एक MCQ में बन सकता है क्वेश्चन कि marble का chemical formula क्या होता है. So you can simply write calcium carbonate. आपसे पूछा जा सकता है why do we use slake lime for whitewashing? So you can give the reason as this. You will write this equation completely कि slake lime, आप इससे पहले जो हमने इक्वेशन लिखी थी, quick lime reacts with water to form slake lime. First you will write down that. उसके बाद आप लिखोगे ये वाला formula in which you will tell that slake lime reacts with carbon dioxide in atmosphere that form calcium carbonate in 2 to 3 days, which provides a shiny appearance to our walls. ठीक है, इतना clear? I hope इतना clear होगा. Now we are going to start with decomposition reaction. Now let us start with decomposition reaction. Decomposition is again a type of reaction that is well known. अच्छा, उससे पहले I want to tell you something. CaCO3 जो कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, it is also known as limestone. Limestone or you can say calcium carbonate. ठीक है? And this is widely used
यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये बहुत यूज होता है. ठीक है, इतना ही बताना था मुझे. जस्ट द नेम, जस्ट राइट इट डाउन. कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम जो होता है दैट इज लाइमस्टोन. ओके, दैट इज लाइमस्टोन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गया था. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. और इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है दैट इज न्यू एज वेल. उसकी प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज नई हो जाती है. अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की. डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें रिएक्टेंट जो होता है वो 1 होता है एंड प्रोडक्ट इज 2 और more. Now you will say what I am trying to say. Combination में हमने इसका उल्टा देखा. Reactant will be 2 or more and product will be 1. But decomposition reaction you can see is just the exact opposite of combination reaction. हमने जो पढ़ा combination reaction की definition उससे बिल्कुल ही opposite होती है decomposition reaction की. Decomposition reaction इसके बिल्कुल ही opposite होता है. Decomposition reaction क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट. प्लीज फोकस. आप इसको साथ ही साथ अपने नोट्स में लिखते भी रहो सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज ऑन द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स, राइट, टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. या एक और इसका मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. सिंगल, ये 2 मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन इसकी. यू कैन गो विद एनी ऑफ इट. वैसे मैं आपको बोलूंगी फर्स्ट वाले के साथ जाओ. दिस इज मोर टू अंडरस्टैंड फॉर यू, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स. सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शंस लिखे हैं, 2 डेफिनेशन लिखी है. सिंगल रिएक्टेंट क्या लिखा है? हाँ, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. या कह सकते हो सिंगल रिएक्टेंट decomposes, as the name suggests, decomposition reaction. So single reactant decomposes to form 2 or more products. जैसे हमने क्या सीखा था कि A प्लस B जो होता है वो मुझे AB देगा. ये हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब ये वाला रिएक्शन क्या कहता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दैट AB विल ब्रेक डाउन टू A प्लस B. ठीक है, समझ आ रहा है? ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ 2 रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए. अब उसी का डायरेक्ट अपोजिट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक ही है हमारा रिएक्टेंट, वही ब्रेक डाउन हो जा रहा है 2 प्रोडक्ट्स में. ठीक है, इसके थोड़े एग्जांपल सीख लेते हैं so that it's clear. Let me rub this definition and I'm rubbing down this one also, so please take a screenshot of it if you want to, or else it is present in your NCERT textbooks as well, so you can copy right from there. So let me just rub it. Now think of an example. Have you thought any example, like any? Let me give you one example. Let us suppose there, okay, AgCl. This is what? AgCl or silver chloride. Silver chloride breaks down to give us Ag plus Cl. हमें क्या मिला? हमें मिला Ag और Cl. Ag is what? Ag is silver and Cl is your chloride. तो silver chloride जो है वो decompose हुआ to give us our first product Ag, that is silver, and second product chloride. और यहाँ हमारा reactant कितने थे? 1. reactant 1, product 2. ये तो clear है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल में दे देती हूँ. जैसे तो पहला एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल में देती हूँ. जैसे CaOH2, ये वाला तो आपने अभी किया एग्जाम्पल, राइट? यू जस्ट लर्न CaOH2 कैसे बनता है.
हमारा जब quicklime plus H2O gives us to form our slackline. Same way slackline को जब आप break down करोगे so it will give you CaO, that is your quicklime, plus H2O, that is your water. You can just write down their names. Slackline, you can write it down, you can write it out quicklime, and water तो आप लिख ही लोगे, right? So this is your second example. यहाँ भी you have one reactant, reactant is your one, reactant हमारा one ही है, but product is 1 and 2. ठीक है? So this is a two examples for decomposition reaction. यहाँ reactant एक but product 2 or more. Now, okay, so this reaction also have few types. हम types of reaction जो पढ़ रहे हैं, but इसके भी कुछ sub types हैं. Okay, these have sub types, and which are, let us see what they are. Oops, I tried to do a flow chart for this. Okay, first है हमारा thermal. तीन तरह के होते हैं. Decomposition reaction can be divided into 1, 2 and let me draw it more there, 3. ठीक है? 3 types होते हैं. First is thermal decomposition reaction. फिर आप लिख लो thermal decomposition reaction. अब thermal decomposition reaction, what is this? So thermal means what? Thermal means what? Heat. Thermal क्या होता है? Heat होता है, right? Thermal is our heat. इसको heat भी कहते हैं, जिसका symbol होता है a triangle. Okay, so this is its symbol. So any kind of reaction in which heat is absorbed. Energy तो absorb होती ही है, heat तो absorb decomposition reaction में होती ही है, but in the form of heat. तो उसको हम थर्मल कहते हैं. आप बोलोगे कि हीट तो हीट ही में absorb होगी. What is this? Nothing new. So don't worry, let me tell you one more thing. Photolytic decomposition reaction, please write it down. I have no space here, so I'll just keep it like this. Let me draw. Okay, photolytic क्या होता है? In this, heat is absorbed in the form of sunlight. You know, plants also absorb heat in the form of sunlight. तो एक तो हो गया थर्मल, जिसमें हीट किस तरह से आपको हीट आपने एब्जॉर्ब की. एक में हो गया सनलाइट से आपने एब्जॉर्ब की हीट. तीसरा होता है योर इलेक्ट्रोलाइसिस. इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके से आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, हीट एब्जॉर्ब करते हो. अभी ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये हुआ क्या यहाँ पे. I think you might not be able to understand here. So इसमें हम वापस आते हैं, but उससे पहले let's get introduced to two types of reaction, या दो characteristics बोल दो, या दो सब कैटेगरी बोल दो, कैटेगरी बोल दो, जो बोलना है you can call it. So endothermic और एक बना आपका एक्सोथर्मिक. ठीक है? एंडोथर्मिक, एंजियोथर्मिक. पहले एंडोथर्मिक की बात करते हैं, फिर एक्सोथर्मिक की बात करेंगे. एंडोथर्मिक क्या होता है? इसमें हीट जो है आपकी वो एब्जॉर्ब होती है. हीट एब्जॉर्ब्ड, इसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, बट इसमें हीट जो है वो होती है प्रोड्यूस. स्टिल यू विल सी कि अब मैंने क्या बोल दिया. तो लेट अस टेक अ एग्जांपल हियर. एक्सोथर्मिक का एग्जांपल लेते हैं. C+O2 gives CO2 plus. नाउ यू विल सी कि हमने तो सिर्फ CO2 सीखा था. व्हाट इज नॉट समथिंग न्यू. जस्ट डू व्हाट? ब्रीथ इन एंड एक्सहेल एंड कीप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर माउथ. यू विल वॉट एब्जॉर्ब कि हवा तो है, बट गर्म हवा है. देयर इज समथिंग वार्म इन इट. तो होता क्या है, when this reaction takes place, so it also forms heat. हीट भी जो है वो फॉर्म होती है. ओके, क्या मैंने समझाया फिर से समझो. एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसमें
हीट भी जो है तुम्हारी वो तुम्हारी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। C plus O2 gives you CO2, we know that, plus heat is also given out, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, स्लिक लाइन वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो CaO plus H2O gives us CaOH2। याद रखना आपको अपने एग्जाम्स में एक ही लाइन में लिखनी है। Here I am running out of space, that's why I am writing it like this। प्लस हीट, यहाँ भी हीट प्रोड्यूस हुई। आपने सुना होगा, आई डोंट नो व्हाट, सीमेंट को अगर आप सीमेंट में भी पानी डालोगे, यू हैव सीमेंट एंड जस्ट पुट सम वाटर इन इट, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि उसके बाद आप जब सीमेंट को टच करोगे देन इट विल फील वार्म, इट विल बी हॉट, टेम्परेचर विल राइज। क्यों? बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस देयर, राइट। हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है जहां भी आपका हीट प्रोडक्ट साइड में हो, wherever if your heat is in your product side then it will be exothermic reaction, no doubts, nothing। heat अगर product side है so just write it down as exothermic reaction, ठीक है। now comes endothermic, what it is? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अभी मैंने आपको थ्री टाइप्स ऑफ decomposition reaction लिखा है and I told you that these three have different way to absorb heat। ये तीनों तरीके अलग अलग तरीके से हीट अलग अलग सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करती है। पहला तो हीट सीधे एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा जो सनलाइट है दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ हीट, सो वहां से हीट एब्जॉर्ब कर लिया। थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सो इसका एग्जांपल इफ आई से, सो मैं लिख सकती हूँ AgCl वाले अगर मैं लिखूं तो AgCl में हीट देयर, AgCl आप ही देखो AgCl ब्रेकआउट कैसे हो जाएगा। AgCl जस्ट केप्ट इन अ बोल, एक चाइना जिसमें इफ यू हैव केप्ट योर AgCl, सो ऐसे ही ब्रेकडाउन थोड़ी हो जाएगा। देयर इज नो रिएक्टेंट, नथिंग इज हैपेंड, सो हाउ इट इज ब्रेकिंग डाउन, इट इज ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू दिस हीट। और आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम हीट ही की वजह से कोई भी ब्रेकडाउन होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस हीट इट इज ब्रेक डाउन इनटू Ag plus Cl। सेम आप एग्जांपल ले सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट्स इज व्हेन यू ब्रेक डाउन, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दोगे सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू क्विकलाइम प्लस योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन गिवन हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड हियर, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तभी कोई आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, सो इट विल गिव यू क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने क्या बताया, एंडोथर्मिक हीट इज एब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक हीट इज प्रोड्यूस। मींस आपको मैं नॉर्मल से वे बताती हूँ, इस एरो के ऊपर हीट है मतलब हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, राइट। हीट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस एंड जब हीट अगर प्रोडक्ट साइड है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट योर हीट इज प्रोड्यूस्ड, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसका ही प्रोडक्ट है हीट, ओके। नाउ यू विल से कि फिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हुआ, इफ हीट इज अ प्रोडक्ट, how it's a combination reaction। so my dear friends, I would like to tell you that heat जो है यहाँ वो कोई substance नहीं है, that is a basically a characteristic। यहाँ मैं heat से क्या बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पे heat से मैं बस कह रही हूँ rise in temperature बढ़ा, that is simply just a characteristic of chemical reaction। chemical reaction की कुछ characteristics होते हैं, इसी में से एक है rise in temperature। and जब heat बढ़ रहा है so basically एक characteristic है, एक फीचर है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, बट इट डजंट मीन कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओनली। द थिंग इज दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड बट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। समझ आई बात? एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस कर दिया, एंडोथर्मिक ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। नाम याद रखना, एक्सो मीन्स हीट प्रोड्यूस, एंडो मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एब्जॉर्ब्ड D and O. That's my personal way to remember it. Rest you can just check it yourself. Now let me just write down here the definition of it. So here's the definition. I hope it is clear. Endothermic, exothermic reaction in which heat is absorbed. आपको ये याद करना बहुत जरूरी है,
reaction in which heat is produced is exothermic. This is very very important. It can come in your examination. Even if अगर definition ही मांगा, still you need to remember the definition. Just a matter of a line, you can easily remember it, because they can give you a question like they will give you C plus O2 gives CO2 plus heat. Name which kind of reaction it is. Yeah, H2O on heat gives H2 plus O2. Name which kind of reaction it is. Let me balance it. Okay. So name which kind of reaction it is. So you can easily tell कि हाँ heat absorb हो रही है, so it is endothermic. यहाँ heat produce हो रही है तो exothermic. I hope this is clear. Now let's come back to our topic. That was decomposition reaction. इतना तो समझ आ गया I guess. अगर नहीं समझ आया so please tell me in your comment section below. Now decomposition reaction जो है decomposition reaction. अब इसका जो है इसका 3 टाइप है. I have told you. Let's first discuss the first type, that is thermal decomposition reaction. Just write it down. Please write it down because it's very important. थर्मल में मैंने बता दिया हीट सीधा एब्जॉर्ब होती है, नथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हीट एब्जॉर्ब हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, जस्ट इन नॉर्मल हीट फॉर्म, तो इसको हम थर्मल कहते हैं. ओके, दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी वाइडली डन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट स्टिल दे कैन गिव यू क्वेश्चंस लाइक दिस बिकॉज ये मेंशन्ड है. let's take example of lead nitrate. लेड नाइट्रेट को जब मैंने हीट दिया, ये सिंबल है हीट का, द ट्रायंगल इज द सिंबल ऑफ हीट. सो मैंने गिव द हीट टू द लेड नाइट्रेट, सो इट फॉर्म्स, इट ब्रेक्स डाउन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. थर्मल मींस हीट इज एब्जॉर्ब्ड ऑब्वियसली, सो दिस इज एंडोथर्मिक. तो हो गया. अब याद एक और बात यहाँ याद रखना, एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स, इन केमिस्ट्री नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग कैन चेंज. कुछ भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं केमिस्ट्री में, बट स्टिल इट इज सेड कि जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम, हियर आई यूज द टर्म मोस्ट ऑफ द टाइम, इज कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये मैं बता दे रही हूँ. सो एक्सोथर्मिक बिकॉज इट कैन हेल्प यू रियली वेरी लॉट इन द एक्सर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. एक्सोथर्मिक जो होता है मोस्टली कॉम्बिनेशन होता है, और जो एंडोथर्मिक होता है तुम्हारा, द एंडोथर्मिक इज मोस्टली योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक जो होगा, कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक होता ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस. दैट आई कांट रिमेंबर ऑफ अ केस जहाँ पे एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता है, बट स्टिल ऑन अ सेफर साइड देयर कैन बी फ्यू एग्जांपल्स. सो लेट अस से मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सोथर्मिक जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन. अब देख भी लो इन ऑल द क्वेश्चन, इन ऑल द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, heat is absorbed, so obviously it is endothermic, but still we'll write most of the time. I hope this is clear. Okay, so lead nitrate breaks down to form PbO plus NO2 plus O2. Lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. Now let's balance it. Lead 1, nitrogen कितना 2. So I have to write it here 2. So balance now oxygen is 3 into 2. यहाँ याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए होगा, ब्रैकेट के बाहर मीन्स दोनों का. So ऑक्सीजन पे अगर 3 है, so 3 into 2 that is your 6. ठीक है, मैं बैलेंसिंग में और डीपली इसको बताऊंगी, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर. सिमिलरली 2 into 2 4 ऑक्सीजन अब यहाँ हो गया है. सो 4 5 6 7, इधर कितना है 3 2 जा 6. ओके, सो लेट मी डू व्हाट, लेट मी राइट 2 हियर. यहाँ पे मैं ब्लैक से लिखती हूँ तो हमें पता चलेगा हमने क्या बैलेंस किया है. नाउ तो यहाँ पे अब फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं. लेड कितना है, इधर 2 है, इधर कितना है लेड 1 है, तो इसको भी 2 कर देते हैं. लेड 2. नाउ हाउ मेनी नाइट्रोजन, सो 2 2 जा 4. 2 इधर है, ठीक है, 1 2 is here, 1 2 is here, एंड ये होल ब्रैकेट से नाइट्रोजन 2 into 2 होगा. देयरफॉर यहाँ से कट करके इसको कर दो 4. तो लेड बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस. नाउ लेट्स टेक फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 2, 4 into 2 कितना हुआ 4 2 जा 8, 9 10 11 12.
12 में इधर कितने हैं? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12. Therefore, it is balanced now. Yeah, this is your balanced chemical equation, a type of thermal decomposition reaction. इसी को मैं फटाफट एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ, and you must remember it. I repeat myself, you must remember this. So, FeSO4, iron sulfate. Iron sulfate breaks down to form Fe2O3. That is your ferric oxide. Okay. Plus sulfide SO3 plus your sulfide. That is SO2. ये SO3, SO2, SO4 की confusion I am going to clear down in my video. I will give you link in description below. So हमारा ये जब हमने लिखा iron sulfate, this actually breaks down to give us Fe2O3 ferric oxide plus sulfate plus sulfide. Okay, so इसमें पहले तो लेट्स फटाफट चेक कि बैलेंस क्या है, बैलेंस कहाँ हो, कुछ हो कि नहीं. एंड या हीट इज द मेन कॉज. हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है टू फॉर्म नंबर ऑफ सब्सटेंस. एक रिएक्टेंट है, यहाँ देखो एक रिएक्टेंट है, बट प्रोडक्ट कितने हैं? वी हैव 3 प्रोडक्ट्स. सो व्हाट इट इज हैपनिंग, द सिंगल reactant is breaking down to form number of products and heat is involved, so thermal decomposition reaction therefore, and heat is absorbed, so also it will be endothermic reaction. Now let us check फटाफट. Fe2 है, यहाँ Fe है, so let's write it down 2 here. So 2 Fe, 2 Fe. Fe is what? Iron. 1 2. So 2 sulfate. So 2 sulfur. We have 2 sulfur, so here how many we have? 1 and 2. 2 sulfur match. Now we have 2 4 ja 8. 8 oxygen है यहाँ, 4 into 2, right? 4 into 2 is equals to 8. अब यहाँ कितने हैं? 3 plus 3 6 plus 2 6 plus 2 8. Means सिर्फ एक यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ा 2, and hence our equation is balanced now. So this is one more example. These two are very commonly used examples, so you should remember this. Just write it down in your notebooks or in your notes. And now we'll talk about electrolysis and photochemical या photolytic decomposition reaction. So आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, so we have to end it up here only. But in next video we are going to start with photolytic decomposition reaction and electrolysis. And then we'll continue to displacement and double displacement reaction, and we'll end this topic. But for today, we are ending up here only. I hope you like my video. If you like my video, so like, subscribe and share my channel. And also, don't forget to ring the bell hang button so you will get all the notifications of my channel. My channel name is Cbse Courses with Riti. And if you like today's video, so kindly comment and tell me how it was. And please don't forget to watch all the videos of class 10. Till then, bye bye and have a good day ahead. And also don't forget to subscribe to my channel.